कमिंग वीक के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से खराब परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस की भी स्ट्रक्चर किस तरीके की दिख रही है। और बाय द एंड ऑफ दिस शो आई एम गोइंग टू टेल यू विच इज़ द फेवरेट सेक्टर फॉर दिस कमिंग वीक, नॉट ओनली कमिंग वीक बट नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स। और इसके अलावा वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कौन सा सबसे खराब सेक्टर रह सकता है जिसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी फिलहाल नहीं ढूंढनी चाहिए। So let's start. But before we start, I should remind you that in the last week, markets were very bad. But from trading perspective, we did excellent. For every trading day, I had put the video during the noon time and even before the market started. So before 9 a.m. I had put the video. वहाँ पर मैंने जो support levels, resistance levels दिए थे, everything worked well. So follow me for that free content. Also, you can join our different plans where you will get more details and key actionables which you can take. Apart from that, you can also join free community. You can just visit our website and वहाँ पर आप register कर सकते हैं, join कर सकते हैं directly free community को. So now let's very quickly start. So सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की ही बात करते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी के हम ज़्यादा लेवल्स की यहाँ पर बात नहीं करेंगे, ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। So overall structure निफ्टी का नेगेटिव है and if you want to understand the key levels then you can watch my morning shows which I publish before 9 and then you can watch around 12 to 1:30 somewhere I put up my nifty videos and bank nifty videos. You can follow that for the exact level what it will be. लेकिन यहाँ निफ्टी का अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो मार्केट के अंदर भी पैनिक है, लेकिन हमारे हिसाब से पैनिक होने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास जो वेव स्ट्रक्चर काउंट है, वेव स्ट्रक्चर के हिसाब से वी आर स्टिल नॉट इन अ नेगेटिव डोमेन बट वी आर इन अ कंसोलिडेशन डोमेन। सो यहाँ पर जो हमारे को दिख रहा है ये सारा एक कंसोलिडेशन पैक चल रहा है। कंसोलिडेशन अगर हमारे पास ये 23,100 और 23,080 अगर हमारे पास ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है देन वी विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू वरी अबाउट। लेकिन उससे पहले फिलहाल हमारे पास वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट, इट्स जस्ट अ कंसोलिडेशन फेज, समवेयर इट विल जस्ट गो अवे। सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी। ओके, सो फ्रॉम निफ्टी परस्पेक्टिव वी आर डन। फ्रॉम बैंक निफ्टी and that's where I have been mentioning that we are going to cover it in a very small fashion, nifty, bank nifty and other sectoral indices. You can watch for the exact levels in the morning shows. So if you look at bank nifty overall, तो बैंक निफ्टी भी हमारा यहाँ पर अगर हम वेव काउंट देखते हैं so it is still positive. तो हमारे हिसाब से थर्ड वेव जो चल रही है that is still positive. Okay, and unless and until it comes below 53,000 we are not going to be very worried about bank nifty. फिलहाल ये consolidation zone है। तो these are the things I am talking about for the investors who are there for 3 months, 6 months, not 3 months but 6 months and beyond. So overall निफ्टी का स्ट्रक्चर कैसा है, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर कैसा है, because that only defines what is going to happen in the overall returns to you. So now if we go to the mid cap and small cap, we are just going to cover few key index and sectorial index also, and after that we are going to cover the most prominent sector which might lead in terms of gains, and we will also cover which is the worst sector. So okay, so nifty small cap, इसका जो हमारा फिगर है यहाँ पर हमने क्लियरली एक आइडेंटिफिकेशन पैटर्न डाल रखा है कि देयर विल बी वेरी वेरी बिग कंसर्न अगर ये वाला लेवल हमारा निफ्टी अगर स्मॉल कैप इंडेक्स ने ब्रेक नहीं किया। सो दैट विल बी अ रियल टफ कंसर्न फॉर अस एंड वी विल सी हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन, हाउ इट इज़ गोइंग टू गो। सो राइट नाउ अगर हम देखते हैं तो इस लेवल जो हमने लेवल मार्क किया है इससे हम 3% नीचे हैं। सो 3% स्मॉल कैप पे बढ़ना, इनफैक्ट 3 से हमें ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा। हमें अगर 5% हम बढ़ेंगे देन ओनली वी कैन सी मोर पॉजिटिविटी, अदरवाइज स्मॉल कैप से आपको दूर रहना चाहिए। नाउ इफ वी गो टू द मिड कैप, सो मिड कैप सेक्टर it's right now in consolidation, but I am fearing because we have done the wave count and
it looks like that this zone could also be broken. So if it breaks below it, right now mid cap के अंदर आपको ज़्यादा opportunity नहीं ढूंढनी चाहिए, unless and until there is a very good kind of setup for a particular stock. Otherwise mid cap का भी structure overall negative है, और अगर ये वाला डाउन, अगर इस वाली लेवल के नीचे हम जाते हैं, then it will become really painful. Now let's talk about Nifty IT. So Nifty IT, we have been maintaining that we still should not buy. So we have created that level already. So people have been bullish that IT will do good. It will do good, no doubt. Our analysis say in next 1 to 2 years, IT should be your go-to sector. But and it is going to provide you very good returns. But if you look at current levels and this zone, so it's around 4 to 5% down from what we want it to cross. So अगर हम 5% का ये रिस्क अभी छोड़ देते हैं और 5% का लालच हम छोड़ देते हैं, तो अगर हम निफ्टी आईटी के अंदर इस लेवल के ऊपर आते हैं कि 30,000 से ऊपर आते हैं, देन इट विल बी अ श्योर बिग बाय, तब हम इसको बाय करेंगे. अभी क्या है, अभी हो सकता है थोड़ा और नीचे चला जाए, या फिर कंसोलिडेशन कितने टाइम तक चलेगा, नोबडी इज एबल टू प्रिडिक्ट दैट. बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ मंथ्स के अंदर डेफिनेटली वी विल क्रॉस 30,000 एंड देन वी विल बाय निफ्टी आईटी. Now if you look at pharma, so pharma we had already marked it that we had already achieved it what was supposed to be done. So at that level we had already marked a very big resistance. Now you can see there has been a very negative news about pharma from Trump's side. Although because pharma, it is not going to fall because Trump is saying something. It is going to fall because it has already achieved a lot. So that's why pharma is going to fall. Trump क्या कह रहे हैं उसके बारे में I think we are not really worried because the timeline is far away. And secondly, Trump कहाँ change हो रहे हैं, you never know. So pharma sector is also going to be a very risky sector to enter right now. So stay away from that, at least on the long side. Auto sector is something which is positive, which we are considering. So as per our analysis, auto sector is going to be in a very positive phase right now. So let's see how the war things go on, and otherwise auto sector is something which we have picked up. But apart from this auto sector, there is another sector which is completely green from coming days perspective. And for auto, we are not saying that definitely this week it is going to be a positive. It might not be positive for next 2-3 weeks, but overall it's positive. So maybe 3 weeks, 4 weeks, as soon as things stabilize, this auto sector will provide you very good returns. If you look at the private sector bank and PSU banks, so private sector, see, this private sector bank is on the verge of getting into a tough zone. So right now, if you look at the zone which we have created here, so if it is just there, in case it falls there and falls below this level and stays there below 27,250, stays there for 2-3 days, then definitely it is going to be a very tough ask for private sector banks. Now looking at the PSU banks is already on the negative side, so it's consolidating. So that's where we are saying that it's negative. So right now, until and unless it crosses above 87,065, we cannot say that it is going to be in any positive territory. So right now we are negative to consolidation side of things in terms of PSU banks. Now before I touch the sector which is going to be a darling sector for next 2 to 4 weeks, I would like to pick up couple of bad sectors. So when I say bad sectors, it is there where I am not expecting it to provide much of the comfort right now. So infrastructure sector is on the negative to consolidation side. I am expecting it more towards negative than consolidation. And if you look at the
realty sector. So realty sector, it's like overall it has been positive because our wave C has completed here. Now we were in wave 3. So right now it is going to be wave 3, but the thing is wave 3, the small portion of wave 3 has completed. So for next week or maybe 2 weeks it might not do well. If it works, it's good, but the overall thing is that you are not looking for the short opportunities in realty. Either you will be looking for the long opportunities or you will have patience, and once we have more opportunities we are going to tell you. So you have to subscribe to our plans so that you know which sector is going up, which sector is not going in a very timely manner. Otherwise we might be picking it up next week or we might not be picking it up next week for the analysis for our YouTube videos. So realty, we are not negative, either consolidation or on the positive side. We would suggest you just have some wait, you do some wait for this sector to come again in the positive direction, and I think it is not going to take too much time. जल्दी ही ये आने वाला है. सेकेंड, अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स हैज़ बीन completely negative. So if you look at, I had drawn this long back. So I had already drawn this long back. So हमारा फर्स्ट टारगेट जो था यहाँ पर ये ऑलरेडी अचीव हो गया है. दिस वॉज इनफैक्ट सेकंड टारगेट. फर्स्ट टारगेट के बाद हमारा सेकंड टारगेट भी अचीव हो गया था. तो राइट नाउ वी आर लुकिंग एट अ नेगेटिव सेटअप इन द मेटल साइड. So no buying in the metal side. That's our assessment. Now going to the most important and darling sector which is going to be in this week and next week. If you look at media, so media could be a very positive sector. When we say positive sector, ऐसा नहीं है कि ये हो सकता है कि कल ही भागने लग जाए, या फिर अगर आप 4 या 5 दिन के अंदर इसने पॉजिटिव नहीं किया तो आप हमें क्वेश्चन करने लग जाओ. See, it's all probability game. So when we say probability game, we are dancing here and there in this range, and this is very crucial range. तो अगर आपको एक थोड़ा रिस्क लेना है तो आप इस लेवल पर भी ले सकते हो और आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं. इस लेवल का नहीं, बट यू कैन पुट अ स्टॉप लॉस हियर. लेकिन आई वुड से कि अगर इस लेवल पर, अगर आपने अभी खरीदा है, इस लेवल पर फिर से ये आता है, देन यू शुड बाय इट अगेन. एवरेज आउट आप करिए, एंड देन देयर इज अ टेंडेंसी दैट इट इज गोइंग टू गो अप. सो वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू ब्रेक ऑन द अपर साइड, एंड व्हेन इट ब्रेक्स it will be a good break. In fact, it will be a very, very good break which we are going to observe. So if you look at how much it has already gone, so it has already gone 22%, right? So I clearly see it has got this much room at least. So 1640 तक यहाँ पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा दैट विल रिमेन एट 6040. सो इफ वी जस्ट मार्क इट फॉर आवर लॉन्गर अंडरस्टैंडिंग, सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट टारगेट. लेट मी जस्ट मार्क इट. So we have mentioned couple of sectors. One is auto and other is media, where you can look to invest right now. There were other sectors also, but because of the paucity of time, we could not cover all of them. All of those sectors which matter to us right now. So our clients are getting those recommendations. So you can subscribe and you can be part of those recommendations. Thank you.